Good morning to all. Today we'll discuss our another application of uniform circular motion, that is motion of a vehicle or a car in a banked curved road. First of all, we'll discuss what is the meaning of banked curved road. Banked curved road means the road in which the outer edge and inner edge are not parallel with each other. That means hill station like road, in this type of road arise in case of our hill station or hill areas, in which outer edge is somewhat increased or raised from the inner edge. जो रोड रे आमर आउटर धारटा इनर धार ठारू समांतराल न होइकी किछि एंगलटा क्रिएट करथिबो. इनर एजटा टिके एंट्री करथिबो बा इनवर्ड थिबो, आउटर एजटा टिके ऊपर को उठिकी थिबो, समहाट रेज हेकी थिबो. ए फिगर अनुसार ए फिगर एटा होछि हमर आउटर एज, एटा होछि हमर इनर एज. इनर एज आ आउटर एज से माने गोटे सरल रेखा रे न रहिकी जदि सेमाना भितरे एंगल क्रिएट हेतिबो थीटा, ताले से रोड को कहा जाए कौन ना बैंकिंग रोड. हमें डेफिनेशन केमी दबा ना द रोड इन व्हिच द आउटर एज इज समव्हाट रेज्ड फ्रॉम द इनर एज, देन द टाइप ऑफ रोड इज नोन एज बैंक्ड कर्व्ड रोड. तो आम मुंडरे बे आसीबो कोन ना काहेकि रोडटा को बैंकिंग करा जाए ना जेते बेले हमर रोडटा बैंकिंग करा जाए सेते बेले कौन पाई करा जाए ना जदि गोटे रोडटा अणओसारिया थिबो से रोड रे हमरा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्सटा क्रिएट हुए. जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्सटा हमरा क्रिएट हबो सेटा हमर गाड़ीटा गला बेले तार टायर ऊपर इफेक्ट पकेबो. ता माने टायरटा जेति दिन लास्टिंग करबा कथा एटा जल्दी खराब हो जाए. तेणु करी हमर फ्रिक्शन फोर्सटा को आमे अवॉइड करबा पई कंप्लीट तो अवॉइड करि परिबानी, जेतिकी दरकार सेतिकी अवॉइड सेतिकी फ्रिक्शन फोर्सटा को यूटिलाइज करबा पई बेले बेले रोड को बैंकिंग करा जाए. ताले बैंकिंग रोड कोन ना जो रोड रो आउटर एजटा इनर एज थारू किछि एंगलटा क्रिएट करिथिबो बा दुई जण जाक भितरे दुईटा धार भितरे किछि एंगल आमे पाइबा, ताले से रोड को कहा जाए कोन बैंक्ड कर्व्ड रोड. ताले एई बैंक्ड कर्व्ड रोड रे केमिति गोटे वेहिकलटा जदि मूवमेंट करूची सेफ्टी वेलोसिटी रे मूवमेंट करि परिबो, तार नेसेसरी कंडीशन कोन सेफ्टी वेलोसिटी रो एबे आमे डिस्कस करिबा. देखो पिला माने एठी आमे गोटे वेहिकलटे नेछि, एटा हमर होची वेहिकलटे. एई वेहिकलटा जेतले कर्व रोड रे मूवमेंट करूची आमे एका देखिबा एई सिस्टम रे केतेटा फोर्स एक्ट करूची. पिले एई सिस्टम रे मध्य हमर तीनटी फोर्स एक्ट करिवो. एक नंबर फोर्स के ना नॉर्मल रिएक्शन, आ सब बेले मन रखिबो रिएक्शन फोर्स किए दबो ना रिएक्शन फोर्सटा ग्राउंड दबो काहाकू बॉडी को दबो. ताले रिएक्शन फोर्स कैपिटल आ गिवन बाय द रोड टू द vehicle. So reaction force, since the road, if the road is present this type parallel road, then this is the concept of reaction force capital R. But since the road is inclined with angle theta and body is present here, so the reaction force is given by the road to the body. So this is the direction of reaction force. If this is the road, here body present, then this is the direction of reaction force. If road is this type, then reaction force is this much. That means reaction force is somewhat making angle theta with vertical. So here this R is the reaction force given by the road to the body. See, this makes angle theta. So if we resolve R into rectangular components, then we find R cos theta and R sin theta. R cos theta acting vertically upward, R sin theta acting towards the center of circular path, if this is the center of the circular path.
Then another type of force comes into play, that is weight force. Always remember, if this is the rod, here body present, then weight force is always vertically downward. If this is the inclined rod, here body present, then here also weight of the body acting vertically downward. The action force acting this type, but weight force always acting vertically downward. So weight force is here vertically downward. W equal to mg, acting vertically downward. Number 3, friction force. In order to stay in the road, बॉडीटा रोड रे रहिबा पई को फोर्स दरकार, फ्रिक्शन फोर्स गिवन बाय द रोड टू द टायर्स. Here also friction force, this is the direction of friction force. If this is the horizontal, then friction force makes angle theta. This is the concept. This is the direction of Fs. This angle is theta. So this is F cos theta and this is F sin theta. So friction force has also two components. One is F sin theta, another is F cos theta. So here we are finding two types of forces. Some acting horizontal direction and some are acting in vertical direction. For horizontal direction, goes to the figure. One force is r sin theta, another force is r cos theta. All are acting in the same direction and towards the center. So r sin theta plus f cos theta. For horizontal direction, they balance with Fc. Fc means centripetal force. That implies r sin theta plus f cos theta equal to mv square by r. This is equation 1. And for vertical direction, again move to the figure. This is one force and this is one force which balance with normal reaction force r cos theta. F sin theta plus mg equal to r cos theta. That implies r cos theta minus f sin theta equal to mg. This is equation 2. Dividing equation 2 by equation 1 by equation 2. We get r sin theta plus f cos theta divided by r cos theta minus f sin theta equal to mv square by r by mg. mm cancel, equal to v square by r. Now dividing numerator and denominator by r cos theta.
LHS. That implies r sin theta plus f cos theta divided by r cos theta divided by r cos theta minus f sin theta by r cos theta equal to v square by r. That implies r sin theta by r cos theta plus f cos theta by r cos theta equal to r cos theta divided by r cos theta minus f sin theta by r cos theta equal to v square by rj. That implies tan theta plus f by r equal to 1 plus f by r tan theta equal to v square by rj. So the formula for safety velocity v square equal to rg into tan theta plus f by r divided by 1 minus f by r tan theta. But f equal to mu r. Mu is the coefficient of friction, f is the friction force, coefficient of friction, r is the normal reaction. That implies v equal to rg tan theta plus mu r by r divided by 1 minus mu r by r tan theta square root. That implies v equal to square root of rg mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta. This is the necessary condition for motion of a vehicle moving along a banked curved now discuss special case. If no friction present, friction force arise, then what happens? Mu becomes 0. That implies v equal to how much? Rg tan theta, which is safe limit for maximum speed. Another case, if angle of banking theta is minimum for minimum wear and tear. Wear and tear means minimum damage of tire of vehicle. Then what happens? Tan theta becomes v square by rg. That implies theta minimum damage means minimum friction force. Then mu becomes 0. So v equal to root over of rg tan theta, and tan theta equal to v square by rg, theta equal to tan inverse v square by rg. This is the necessary condition for minimum wear and tear.
we'll discuss non-uniform circular motion. Non-uniform means not constant or variable. Which quantity is variable? That means if the velocity of a body or particle while moving along a circular path changes. Changes means magnitude changes and direction also changes. At every point, at each point, at each point. If the velocity of a body or particle while moving along a circular path changes at every point or each point, then it is said to be in non-uniform circular motion. एग्जाम्पल कौन ना जिते बड़े आमे पानी बाल्टीटा रखीचे पानी बाल्टीटा को आमे घुराऊचे केमिति घुरेबा ना मन रखिबा पिले जदि बॉडीटा हॉरिजॉन्टल सर्कल रे मूवमेंट करूची ताल से मोशन को कहा जाए कौन ना यूनिफॉर्म मोशन जदि वर्टिकल सर्कल रे बॉडीटा मूवमेंट करिवो वर्टिकल सर्कल रे आमे पानी बाल्टीटा को धरिक बुलेबा किंबा आमे आउ कोन करबा ना रामदोली रे बसिबा ताले सेही केस रे आमे जो तळ पोर्शन रु ऊपर पोर्शन को एमती घुरुचे रामदोली रे एटी गोटे पोर्शन एमती ए पॉइंट रे डिफरेंट पॉइंट रे एटाला लोएस्ट पॉइंट एटाला हाईएस्ट पॉइंट एटाला डिफरेंट पॉइंट सब पॉइंट रे वेलोसिटी कौन हम ना चेंज हम वेलोसिटी चेंज हम मीन्स वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड चेंज हम वेलोसिटी रो डायरेक्शन टा चेंज हम तमाने ईच पॉइंट ए न्यू टाइप ऑफ वेलोसिटी देन द टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. So if a body moves along a non-uniform circular motion, what is the necessary condition for the body to move along the circular path, vertical circular path easily? Or we may calculate here what is the velocity at the lowest point. This is the lowest point. What is the velocity at the highest point? Or what is the velocity at any observation point? We will calculate here. And now we will discuss motion in a vertical circle. So in order to discuss the motion, first we draw a vertical circle having center O. This is the lowest point L, lowest point, or we may call this as bottom point. This is the highest point H, the top point. Let this is our observation point P. This is weight mg. Let this, since this is a non-uniform circular motion, let that at the lowest point velocity is u, at the observation point velocity is v. Velocity must be changes. R is the radius of the circle. N is the perpendicular. Weight, this is weight mg. This is the string.
This is the particle position having mass m, making angle theta. This is tension T. This is height h. This is r minus h. So consider a body. We are discussing about the string mass system. अर्थ आम गोटे पत्थरटा को गोटे सूतार बांधि देचे ताको आम वर्टिकल सर्कल रे मूवमेंट करुचे ताले आम ये बॉडीटे नहींचे मास केते एम टायर्ड विथ ए बंधाई स्ट्रिंग सूतारे एंड रोटेटिंग इन ए वर्टिकल सर्कल गोटे वर्टिकल सर्कल रे आमे ताको मूवमेंट करूँ सर्कल रेडियस केते ना स्मॉल ताले एबे आमे बाहर करबा वेलोसिटी एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट एठी आमे पी पॉइंट ताको नै जे ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी रे बाहर करवा वेलोसिटी केते ताले मने कर ऑब्जर्वेशन पॉइंट v रो वेलोसिटी केते ना v p पॉइंट रो वेलोसिटी हला केते v हमरो फिगर अनुसार OL होची रेडियस स्मॉल r ON होची r माइनस h मने कर p पॉइंट ता h हाइट रे अछि from lowest point according to एठी हमें एनर्जी कंजर्वेशन पकेबा एनर्जी कंजर्वेशन कोन ना L पॉइंट रे एनर्जी जेति की P पॉइंट रे सेति की H पॉइंट रे भी सेति जेते बेले गोटे बॉडीटा मूवमेंट करूची एवरी पॉइंट रो एनर्जीटा समान आसे ताले एटा को जाय कोन ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोन कहूची ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम अनुसार टोटल एनर्जी एट पॉइंट P ऑब्जर्वेशन पॉइंट P रो एनर्जी जेति की टोटल एनर्जी एट पॉइंट L भी से लोएस्ट पॉइंट रो एनर्जी जेति की ऑब्जर्वेशन पॉइंट रो एनर्जी से एबे जेतले आमे लोएस्ट पॉइंट पिले जिबा लोएस्ट पॉइंट रे बॉडी रो को एनर्जी पाइबा ना काइनेटिक एनर्जी तले P पॉइंट को जिबा एटी आमे दी प्रकार एनर्जी पाइबा गोटेला मूवमेंट करूची वेलोसिटी v रे ता सहित हाइट उठिची तले से हाइट उठिबो एनर्जी किछि कन्वर्ट हबो पोटेंशियल एनर्जी ताले हमर P पॉइंट रे एनर्जी कोन ना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू L पॉइंट रे एनर्जी कोन ना ओनली काइनेटिक एनर्जी ताले हमें फार्मूला पुट करबा हाफ mv स्क्वायर प्लस mg हाइट केते अछि h इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर ये जो वेलोसिटी u रु v को चेंज हला काहे कि एठी जेति काइनेटिक एनर्जी थिला नि कन्वर्ट हला किछि काइनेटिक को ता सहित किछि आसिला कोन पोटेंशियल एनर्जी दुई पटो m काट देले तले हाफ v स्क्वायर प्लस gh इक्वल टू हाफ u स्क्वायर दैट इंप्लाइज v स्क्वायर प्लस 2gh इक्वल टू u स्क्वायर तले v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh दैट इंप्लाइज v इक्वल टू रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 2gh दिस इज द velocity equation at observation point देखो पिले एठी हमर वेलोसिटी u थिला v हला आ आमे देखले v टा कहा पर डिपेंड करची u ऊपर आ h ऊपर जेते ऊपर गोटी उठी जिबा से अनुसार हमर वेलोसिटी टा चेंज हो जेतु वेलोसिटी टा एठी चेंज होची तन डाको आमे एग्जांपल नउचे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एबे आमे बाहर करबा टेंशन मन रखिबो पिले जेते बळे आमे स्ट्रिंग केस नबा
स्ट्रिंग केस रे आमे जो रिएक्शन फोर्सटा पाइबा ताको आ नॉर्मल रिएक्शन न कहि कि ताको कह जाय कोन ना टेंशन फोर्स। ताले हमर पी पॉइंट को जिबा एबे पी पॉइंट रे आमे केतरा फोर्स पाउचे देखो पिले एटाला पी पॉइंट एटाला हमर थ्रेडटा ताले एठी वेट गला केते ना mg एतर वेट आसला mg रिएक्शन फोर्स थ्रेड रे दबा ताले रिएक्शन फोर्स टा एठी कोन आसीबो ना टेंशन फोर्स टी mg टा केते एंगल करची थीटा एटा हेला केते थीटा तो एटा तले थीटा हबो एटा केते हबो ना mg cos थीटा एटा केते हबो ना mg sin थीटा। ताले हमें एठी p पॉइंट रे दी प्रकार रो फोर्स पाउछ गोटे हला वेट mg acting vertically downward। Number 2 tension capital T acting along the string। Here T balance with mg cos theta, so the net force acting along the string equal to T minus mg cos theta। This T minus mg cos theta, this is the direction of mg cos theta and this is the direction of T, so the net force equal to opposite direction T minus mg cos theta which acting towards the center। The force which acting towards the center it behaves as centripetal force, so T minus mg cos theta behaves like centripetal force। Then from figure in the triangle ONP cos theta equal to B by H equal to ON by OP equal to R minus H by R। Now T minus mg into R minus H by R equal to mv square by R, that implies T equal to mv square by R plus mg into R minus H by R equal to m by R v square plus g into R minus H। But v square equal to u square minus 2gh, this is the velocity at observation point P, so tension T equal to m by R u square minus 2gh plus gr minus gh equal to m by R u square minus 3gh plus gr। This is the expression for tension at point P on the string। Now we discuss special case। Case 1, if you are moving to the bottom point, then what happens? Height becomes 0, so TL equal to m by R u square plus gr। At the top point H, height becomes diameter, that is 2r, so TH becomes m by R u square minus 5gr। Now TL minus TH equal to 6 times mg। By solving these two equations, we are finding the tension at the lowest point and highest point becomes 6 times weight of the body। Maximum tension at the lowest point and minimum tension at the
highest point. For looping the loop means for easily moving along the vertical circle what is the necessary condition. Looping of loop, the body is able to reach the highest point. केतेबेले बॉडीटा हाईएस्ट पॉइंट रे पहुँचब जेतेबेले आमर कंडीशन होची TH हबो पॉजिटिव. TH पॉजिटिव मीन्स TH greater than equal to 0. That means TH रा फॉर्मूला m/r u square minus 5gr greater than equal to 0. So u square minus 5gr greater than equal to 0. That implies u square greater than equal to 5gr. That implies u greater than equal to root over 5g. बॉडी टा हाईएस्ट पॉइंट रे पहुँचवा टेंशन टा कौन हवा दरकार पॉजिटिव. हाईएस्ट पॉइंट रे जतले बॉडी टा पहुँचब मिनिमम वेलोसिटी तार लोएस्ट पॉइंट रे केते दरकार लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी रूट ओवर 5g हवा दरकार. सेमिति मिनिमम वेलोसिटी at top एटाला कौन मिनिमम वेलोसिटी at bottom. बॉडीटा टॉप को जीवाई हेले बॉटम रो वेलोसिटी केते हवा दरकार रूट ओवर 5g. सेमती टॉप रे जदि आमर वेलोसिटी अधिक हो जिवो ताले बॉडीटा लूप न करिकि एमिति खसिकि पळेबो. त बॉडीटा लूप करबा पई हेले आमर मिनिमम वेलोसिटी कौन ना आम जाने v स्क्वायर फॉर्मूला u स्क्वायर माइनस 2gh. हाईएस्ट पॉइंट को गले h केते जीवो 2r ताले v स्क्वायर इक्वल केते जीवो u स्क्वायर माइनस 4gr. u रो वैल्यू केते ना 5gr माइनस 4gr इक्वल टू gr. दैट implies v equal to root over g. This is the minimum or critical velocity of the body at the highest point. This complete your circular motion and this much for today. Thank you.